वेलकम टू माय चैनल मखजन ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज राइटिंग। एन ऑर्थोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट फीलिंग्स आइडियाज इज कॉल्ड राइटिंग। इट्स अबाउट डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज थिंग्स अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट. It has dual purpose or to express and impress. It is also a process of using symbols to communication thought and ideas in a readable form. मतलब जो राइटिंग है उसमें हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को लिखते हैं जो हम दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हम किसी पेज पर किसी लेटर के तौर पर जब हम इन सारी बातों को लिखते हैं, दिस कॉल्ड इज राइटिंग. व्हाट इज मैकेनिक्स? The I, the word mechanics is used to describe the formulating of the printing's world. Writing mechanics are the conventions governing the technical aspect of writing. The goals of the mechanics of writing to make the writing and grammatically correct. जो मैकेनिक्स है उसका राइटिंग से लिंक इस तरह है कि हम जब किसी लेटर या किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसकी करेक्शन करते हैं, उसमें मिस्टेक्स देखते हैं। उसका एक मकसद है कि इसमें किस किस्म की एक मिस्टेक्स ना हो और इसमें टेक्निकली जो है उसे हम करेक्ट करते हैं। तो कॉल्ड इज अ मैकेनिक. हम देखते हैं कि इसके फैक्टर इज मैकेनिक ऑफ राइटिंग. इटैलिक्स. A slanting a slanting font style is called italic, which is used when writing wish to emphasize or giving a special significance to word or word. एक लफ्ज़ को जब हम ज़ोर देते हैं मतलब एम्फसाइज करते हैं तो हम उसे इटैलिक्स कर सकते हैं, स्टाइल में लिख सकते हैं. इसे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है आगे. जब किसी लफ्ज़ को हम स्टाइल से लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड इटैलिक. Punctuation. The mark such as a comma, colon, semicolon, and bracket used in a writing to spot its sentence and their elements clarify their meaning. हम जो पंचुएशन है इसमें कोमा कॉलन सेमी कॉलन ये इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सेंटेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये इस वक्त कहना क्या चाह रहा है, कि ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, सवाल किया जा रहा है या आगे बढ़ रहा है. इसमें हर चीज़ इसलिए एक्सप्लेन की जाती है. ये पंचुएशन सेंटेंस में इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इमोशन, फॉर मतलब कि समझाने के लिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं सेंटेंस में. सेंटेंस एरर. Sentence error or error relate to grammar and meanings within sentence in standards writing English. कि जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं उसे हम सेंटेंस एरर कहते हैं. जैसे कि अगर कहीं पे वर्ब ऑब्जेक्टिव आगे पीछे यूज़ हो गया हो तो हम उसे कहते हैं सेंटेंस एरर. Capitalization. Capitalization is writing the word with its first letter in a upper caste and small letter is a low caste. कि जो स्टार्ट का लेटर होता है वो अपर होता है और जो बाकी यूज़ किए जा रहे होते हैं वो लोएस्ट होते हैं. जैसे कि कैपिटल में सी इज़ अपर एंड ए पी जो भी बाकी हैं ये लोअर. Spelling. Spelling is the correct arrangement of letter that form word. जो लफ्ज़ों में हम स्पेलिंग की मिस्टेक्स करते हैं कि समटाइम हम एस यूज़ कर लेते हैं और समटाइम नहीं यूज़ करते, और समटाइम हम कहीं पे बिग लेटर यूज़ कर लेते हैं और कहीं पे स्मॉल लेटर, जो हमारी ये स्पेलिंगल मिस्टेक होती है. और कोटेशन. इट्स मीन कॉपी अ पैसेज ऑफ समवन एल्स वर्ड्स एंड क्रेडिटिंग द सोर्स. कि जब कोई बात की जा रही होती है कि हम किसी की खास बात उसने कही है तो हम उसे कोटेशन कहते हैं. Abbreviation. It is the shortened forms of the word or phrase. मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. मैकेनिक ऑफ राइटिंग में जो है ये सिर्फ पंचुएशन स्पेलिंग ही यूज़ नहीं हो रहे होते. इसमें ग्रामर, ऑर्गेनाइजेशंस, हैंड राइटिंग, हैविंग अ क्लियर पर्पस फॉर राइटिंग, राइटिंग इज़ अ स्टेबल स्टाइल एंड फॉर्म, चॉइस ऑफ वर्ड, इस तरह की बहुत सी चीज़ें मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग में ही ऐड होती हैं. इटैलिक.
हम इसे विद एग्जाम्पल के साथ अब देखते हैं. Italic and underlines can be used interchangeability but not at the same time. When we use italic and underline the identified titles of larger volume again magazine books magazine बुक्स पोइट्री न्यूज़पेपर सोन इस तरह की जो जो आर्ट चीज़ें हैं इसमें हम जब किसी चीज़ को स्टाइल में लिखते हैं तो हमारा उस चीज़ पर फोकस होता है. Italics आर यूज when types while underline are used when writing. For example, I have had subscriptions to the Baltimore Sun and the London Times. क्या हम इसमें जिस पर एम्फसाइज हैं वो है बेल्टीमोर सन. Punctuation. Punctuation clarifies sentence structures, separating some words and grouping others. It adds a meaning to writing word. They are the periods, question mark, exclamation point, comma, semicolon, colon, so on. Punctuation. फुल स्टॉप. सबसे हम देखते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ पे यूज़ होता है. यूज़ एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. क्वेश्चन मार्क यूज एट द एंड ऑफ एन interrogative sentence to form a question. Comma using to denote a phase in a sentence. Exclamation mark used to denote shock, surprise, danger, or a raised voice. A quotation mark used to show that someone else has said it. Colon use it to indicate what is to follow next. Semicolon used to link to independent cause. Apostrophe used to show position or for contraction of word. Hyphen used to gloss words together. Slash used to spot letters, numbers of word. Ellipsis marks used to separate atoms in a series. Rounds bracket used to add extra information in a sentence. Sentence error. A types of sentence error now has a sentence framework. Fragment is a groups of words that used together does not form a complete sentence. It is just a part of a sentence that does not express a complete idea. It occurs when an incomplete sentence is presented as a complete sentence, such as a letter, a phrase, or independent clause. To stand on it one have thought it is a complete sentence. For example, my mother, she works in the kitchen. She is an error because I already used my mother. We enjoy watching all movies. We is so smaller letter so error is a we. Types of sentence error. Run on sentence. There are sentences that run beyond the points they where they should stop and a new sentence begin. For example, I am enjoying the book. Say it is well writing and interesting. Fragment. While is a sentence fragment might include a subject and a verb is an variable feels to present a complete thought and cannot stand alone. For example, I will do well it is exam. Unless there is a questions of bioethics. This underline here, this is the error. Commas, splits. Two sentence spe- separated online by a comma. For example, I don't want to fly kids like you. I want. Spelling is the research work should be consistent, clear, clean, and correct expressions. Expert in quotation, the spelling is the quotation must be organized. Whether the correction is
correction or incorrect, correct and incorrect. If we have to divide any word, we should not do so at the end or the line. If the word does not fit there, we should leave the space and bring the word in the next line. Capitalization. Capitalize for proper noun in other world. Capitalize the mean names of people. जिसके मैंने पहले कहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जब हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं तो हमें बताया करता है कि स्टार्ट का जो लेटर है हम उसे कैपिटल लिखते हैं, या जहाँ पे नेम यूज़ हो रहा होता है हम उसे भी कैपिटल लिखते हैं. जैसे कि द रिसीव अ गिफ्ट फॉर अंकल जॉर्ज बट नॉट फॉर माई अदर अंकल. यहाँ पे यू जो है कैपिटल है, वहाँ पे अंकल का डज नॉट कैपिटल. Occupation. The definition of occupation is word of praise that are taken from someone else or from liter- literary world of the asking price of something. An example of a quotation is when you take a passage from Shakespeare and repeated it has written without changing any of the word. Audition mark rules. Only but occasions marks around the world that are spoken loud. Guys said thank you मीन इज़ ऑक्यूटेशन. इस तरह की मज़ीद एग्जांपल्स हैं, आप उसे देख सकते हैं कि जब किसी की इस तरह की बात को कही गई हो, जैसे कि थैंक यू इज़ स्पेशल. एब्रीविएशन. New rules abbreviation that are not familiar to your readers unless you are trying to hide the meanings intentionally. The best price practice would be to use the full title first, followed immediately by the abbreviation. Once this is done, you could use the abbreviation. Instead, familiarize your read with the abbreviation that you use. Don't let them have to wonder wonder what they actually mean. कि आपका कहने का असल मीनिंग क्या है. कि आप जब ट्राई करते हैं और जब किसी मीनिंग को हाइड करते हैं कि हाँ इस मीनिंग का कहने का मतलब क्या है, एब्रीविएशन. इनिटियलिज्म मतलब इसमें अब हर चीज़ कैपिटल है. और जैसे कि हम कहते हैं इसका मतलब क्या है, वो एब्रीविएशन है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं. FBI जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. इस तरह की फर्दर एग्जांपल है कि RAM, SIM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफाई मोड्स. थैंक यू वेरी